Okay, students. So in this class, I will be talking about a very important concept in object-oriented programming, and that is known as inheritance. So inheritance is considered as a pillar, as one of the pillar of object-oriented programming. So it is very important that you all must have a very good and solid understanding and also practice about this particular concept, which is inheritance. So what is inheritance exactly? So I'm gonna give you a very short description, because you all will basically learn this much deeper in your theory classes. Okay, so over here I'm gonna give you a very short description in theoretical point of view. So inheritance is a mechanism in which one object acquires all the properties and behaviors of a parent object. Okay, so इनहेरिटेंस एक ऐसा तरीका है, एक ऐसा मैकेनिज्म है ऑब्जेक्ट, जिसके अंदर एक ऑब्जेक्ट जो है वो सारी प्रॉपर्टीज या सारे बिहेवियर्स जो हैं वो हासिल कर लेता है अपने पेरेंट ऑब्जेक्ट से. ठीक है, तो यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो ये है कि जो प्रॉपर्टीज और जो बिहेवियर पेरेंट ऑब्जेक्ट अपने पास पॉजेस रखेगा या रखेगा अपने पास, वो सारी प्रॉपर्टीज और वो सारे बिहेवियर्स जो हैं वो एक्वायर कर लेगा चाइल्ड ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो मच लाइक योर characteristics and your properties which you inherit from your own parents. So in the same way, this concept is being used in object oriented programming. So the idea behind inheritance is that you can create new classes that are built upon existing classes. ठीक है, कि आप न्यू क्लासेस बनाते हो. ठीक है, जो न्यू क्लासेस आप बना रहे हो, जो नया ब्लूप्रिंट आप बना रहे हो, वो इस्तेमाल करके बना रहे हो जो पहले से आपने क्लासेस बनाई नहीं है. जो आपकी बुनियाद या जो आपकी बेस क्लासेस हैं उनके जरिए यू आर क्रिएटिंग न्यू क्लासेस. ओके, सो द आइडिया इज basically this particular statement of inheritance. So when you inherit from an existing class, you can reuse methods and fields of the parent class. जब आप inherit करते हो existing class से, जो क्लास पहले से आपने बनाई हुई है, जो क्लास पहले से मौजूद है, जब आप उसको inherit करोगे, ठीक है, तो जो भी methods और जो भी fields उस पेरेंट क्लास के अंदर मौजूद होंगी जिससे आप इनहेरिट कर रहे हो, वो चाइल्ड क्लास के अंदर क्या हो जाएंगी, एक्वायर हो जाएंगी. मोर ओवर यू कैन ऐड न्यू मेथड्स एंड फील्ड्स इन योर करेंट क्लास ऑल्सो. इसके साथ साथ जो आपने न्यू क्लास बनाई है उसके अंदर आप कुछ प्रॉपर्टीज और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो उस क्लास की खुद की भी डिफाइन कर सकते हो. जैसे कि आपके अंदर बहुत सी क्वालिटीज, बहुत सी आपके अंदर जो एट्रीब्यूट्स होते हैं आपके पेरेंट्स के होते हैं. ठीक है, आप पेरेंट्स से इनहेरिट करते हो, आपके बोलने का तरीका, आपका नेचर, राइट. तो कुछ चीज़ें तो आपके पेरेंट्स से आप इनहेरिट करते हो, कुछ चीज़ें आप सेल्फ डेवलप करते हो. तो उसी तरीके से जब आप क्लास बनाओगे, आप एक न्यू क्लास बनाओगे एग्जिस्टिंग क्लास से इनहेरिट करके फीचर्स, बिहेवियर्स, तो कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आप स्पेसिफिकली उस न्यू क्लास के अंदर भी क्या करवा सकते हो, इंक्लूड करवा सकते हो. सो इनहेरिटेंस रिप्रेजेंट द इज अ रिलेशनशिप विच इज ऑल्सो नोन एज अ पेरेंट एंड चाइल्ड रिलेशनशिप. तो बेसिकली वही वाली बात जैसे मैंने आपको अभी बताया कि इसमें जो भी रिलेशनशिप है वो एग्जैक्ट पेरेंट और चाइल्ड रिलेशनशिप के ऊपर ये कॉन्सेप्ट जो है वो बेस करता है, और इसको हम इज अ रिलेशनशिप कंसिडर करते हैं. ठीक है, सो इफ आई स्टेट द रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इनहेरिटेंस, सो इट कैन बी कंसिडर्ड एज अ इज अ रिलेशनशिप. तो इसको और थोड़ा सा एक्सरसाइज के साथ अब मैं डिमॉन्स्ट्रेट करूंगा. ठीक है, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट जो है ये और बेहतर तरीके से क्लैरिफाई हो जाए. तो पे वेरी क्लोज अटेंशन व्हाट आई एम स्टेटिंग एंड व्हाट आई एम डूइंग, राइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, वी गोना क्रिएट अ बेस क्लास. बेस क्लास का मतलब पेरेंट क्लास. ठीक है, मैं एक पेरेंट क्लास बनाऊंगा जिसको मैं नाम दूंगा एनिमल, in which
वी गोना डिफाइन सम जेनरिक स्टेट्स एंड बिहेवियर। जेनरिक क्यों बोल रहे हैं यहाँ पे, जेनरिक इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि जो स्टेट्स हैं और जो बिहेवियर हैं वो आम हैं, वो जो एनिमल के अंदर होते हैं, पाए जाते हैं, ठीक है। अब कौन सा एनिमल है, एनिमल की बहुत सी टाइप्स होती हैं, राइट। तो जब टाइप्स की बात होगी तो वहां पे हम क्या करेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो हर एनिमल में क्या होंगी, कॉमन होंगी, ठीक है। तो जो कॉमन प्रॉपर्टीज हैं, जो जेनरिक प्रॉपर्टीज हैं, वो हम एनिमल क्लास के अंदर डिफाइन करेंगे। और फिर उसके बाद जो स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज हैं, जो यूनिक प्रॉपर्टीज हैं, वो जो क्लासेस बनेंगी या जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स की हम बात करेंगे, उन क्लासेस बनाएंगे, उसके अंदर जाके हम उन प्रॉपर्टीज को डिफाइन करेंगे, ठीक है। और जो बेस प्रॉपर्टीज हैं वो इस एनिमल क्लास से हम क्या करेंगे, इनहेरिट करेंगे। तो क्रिएट सम ड्राइव क्लासेस। ड्राइव क्लासेस का मतलब चाइल्ड क्लासेस, ठीक है। ड्राइव का मतलब चाइल्ड, बेस का मतलब पेरेंट, फॉर एनिमल्स दैट देन एक्सटेंड। एक्सटेंड का मतलब इनहेरिट, ठीक है। एक्सटेंड का मतलब होता है कि आप एक क्लास से दूसरी क्लास को क्या कर रहे हो, इनहेरिट कर रहे हो। तो एक्सटेंड फ्रॉम बेस एनिमल क्लास। दोबारा आप इस कॉन्सेप्ट को सुन लें कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक बेस क्लास बनाएंगे। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं, बेस क्लास इज ऑल्सो नोन एज पेरेंट क्लास। और किस लिए बना रहा हूं मैं, एनिमल के लिए बना रहा हूं, राइट। जस्ट एन एनिमल, अभी यहां पे मैं नहीं बना रहा कौन सा एनिमल, ओके, जस्ट एन एनिमल। मैं उसके लिए एक बेस क्लास बनाऊंगा और उसमें जेनरिक प्रॉपर्टीज जो है वो डिफाइन करूंगा। स्टेट्स आपको पता है कि आप फील्ड्स के जरिए डिफाइन करते हो, ठीक है। और आपका जो बिहेवियर है वो मेथड्स के जरिए डिफाइन होता है क्लास के अंदर। तो जो जेनरिक, जो आम, जो कॉमन स्टेट्स हैं और जो कॉमन बिहेवियर हैं वो हम इस एनिमल क्लास में डिफाइन कर देंगे फॉर एन एनिमल, राइट। अब किस टाइप ऑफ एनिमल की बात हो रही है, आइदर एन एनिमल इज अ डॉग और एनिमल इज अ cat, which kind of an animal it is, so it will be a derived class, right. And for derived class we're gonna extend from the base class, okay, we're gonna inherit the base animal class for constructing derived classes, okay, for constructing child classes. derived class को child class भी बोला जाता है. So implement unique characteristics in derived classes according to the characteristics of a specific animal. यानी आपको इंप्लीमेंट करना होगा यूनिक कैरेक्टरिस्टिक। जैसे मैंने बात करी थी, कुछ कैरेक्टरिस्टिक यूनिक भी तो होंगी ना, एनिमल में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन होती हैं और कुछ, हर एनिमल की कुछ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो जो यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उन्हीं के बेस पे हम डिफरेंट एनिमल्स को क्या करते हैं, डिफरेंट आइडेंटिटी प्रोवाइड करते हैं। हर एनिमल का डिफरेंट नाम है, डिफरेंट उसकी कुछ क्वालिटीज होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। सो in derived classes, according to the characteristics of a specific animal, we're going to implement those characteristics, and then we're going to create objects of derived classes in main class. तो फिर हम क्या करेंगे, in the very end we're going to create objects. हम objects बनाएंगे, किस क्लास के ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे, derived classes के। कहाँ बनाएंगे, मेन क्लास के अंदर, जैसे हम करते हुए आए काम। देन प्रोड्यूस आउटपुट बाय कॉलिंग द हेल्पर मेथड। और फिर कुछ हम हेल्पर मेथड्स बना देंगे जिसके जरिए हम डिफरेंट आउटपुट जो है प्रोड्यूस करके एक इंटरैक्टिव प्रोग्राम जो है वो क्रिएट करेंगे, ताकि आपको बेसिकली इस एक्सरसाइज का जो पर्पज है वो ये है कि आपको इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट डिलीवर हो, राइट, उसकी इम्प्लीमेंटेशन डिलीवर हो, ताकि आप ये समझ लो कि बेसिकली इनहेरिटेंस जो है वो कहाँ पे, किस लिए, और हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर, ठीक है। सो इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल, इट्स जस्ट एन एक्सरसाइज, इट्स अ वेरी बेसिक एक्सरसाइज, इट्स नॉट अ वेरी हाई एंड एक्सरसाइज, बट इट विल डू द जॉब, right. The job is to give you an overview about the concept inheritance, right. So we're going to proceed further. Now we're going to create an animal class. So I'm going to open up the INTELLIJ. Okay, now I am creating a new project, so I'm going to go to the file, click on new project. Then again the pre-selected component I'm going to leave it as, which is Java, and I'm going to click on next. Then select create project from template, command line application, give a project a unique name. So I'm going to call it inheritance
example, okay, and then click on finish. I'm gonna select to open this project in the same window. Okay, now over here we have the main class created, in which we have main function. So now what our task is to create a new class. So I'm gonna right click on the package folder, select new Java class, give this class a name. In this case we are creating a parent class or a base class called animal. Alright, so inside this class what I'm gonna do is I'm gonna build some features, okay, which are generic features for an animal. So every animal have a unique name, have a brain, have a body, have a size, and have a weight. Okay, so every animal has these properties. So what I'm gonna do is I'm gonna come over here and first I'm gonna define for the name a field which will be a string data type. Okay, so it will hold the name for an animal, and then for the brain it will be an integer which basically will represent that the animal contains a brain or not. And then we're gonna have one more field for the body, or you can give it a name as body size also. Then its physical size, okay, then the weight of an animal. Okay, so all of these are generic states or generic features of an animal for which we have created these particular states or fields. Okay, and now after this again I am going to initialize all of these values, all of these fields by the help of constructor. And you guys know or that the constructor is basically a function which is called whenever you create an object out of your class. Okay, so whenever you create an object, what you do basically is you call the constructor, right? After the new keyword you call the constructor, and then you initialize the data by passing out the parameters. So in this case I'm gonna make the constructor, okay, by providing the access modifier and then the constructor name, and you know that the constructor name is always the same as that of a class name. And then you're gonna provide the values, okay, for the name a parameter, for brain of an animal, for body of an animal, for physical size of an animal, or for weight of an animal. You can also include as much properties you like which are generic in nature. Okay, so now after this what you're gonna do is you're gonna initialize by the help of this keywords the states, the fields of the class. Okay, so first of all the name, you're gonna initialize it with the parameter name. Then for brain you're gonna initialize, then for body, then for size, and then for weight. Okay, now you can see that I have initialized all the fields which I have defined over here by the help of this keyword. ठीक है, तो जब ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो जो भी हम यहाँ पे पैरामीटर्स पास करेंगे वो सारे पैरामीटर्स जो हैं वो कहाँ जाएंगे, वो सारे पैरामीटर्स हमारी फील्ड्स को क्या करेंगे, इनिशियलाइज कर देंगे, इसमें डाटा स्टोर कर देंगे इन सारी फील्ड्स में. ठीक है, तो ये काम हमारा कंस्ट्रक्टर से पूरा होगा. नाउ व्हाट एल्स इज टू डिफाइन सम helper methods. Okay, the methods which are basically generic in nature for any kind of animal. So every animal you know eats, okay, every animal moves, every animal have a name, so it will return the name. So these are basically the accessor or getter methods, right? So now first of all every animal
the generic nature of an animal, that every animal eats and every animal moves. So what we're gonna do is we're gonna make a helper method, a generic helper method in this class, in this base class called eat. Okay, so I'm gonna proceed by giving out the access modifier, the return type for the function, and then the function name itself. Now over here just I'm gonna print out the simple statement which represent that this function is called by the base class, okay, animal dot eat. Alright, so it is just representing that this function is calling from the animal class, and now I'm gonna say is called. Alright, now one more function, public void move. Alright, you can also say speed, it's up to you, but you know that every animal move with a specific speed, so we're gonna need one more parameter within the argument of this function, and that particular value will be speed and the data type would be integer. And now I'm gonna say that a simple statement, I'm gonna print it out, animal dot move function, which is a function, is called, and now after this I'm gonna say animal is moving at. Now the speed will be concatenated by this parameter over here, and then I'm gonna say the unit of speed, which is miles per hour. Okay, so as you can see that these two methods are generic methods. Alright, so that's why I have defined both of these methods within the parent class, which is animal. Alright, now what else I will do is I will make these getter method for the name, brain, body, get size of an animal and get the weight of an animal, so that we can print out these values if we need it. Okay, so I'm gonna make it public void get name, sorry, the return type of this method would be string, because we are returning the string data. Get name, return what it will return, it will return the field data of name. And now in the same way we're gonna proceed further by making another function, another getter function for get brain. Alright, so this will return that the particular brain for a specific animal, and then for the body I'm gonna say get body, and the body, you know that we have defined it in integer format, so I'm going to return an integer data. In this case it would be which field? Body. Okay, now moving on, we're gonna have one more function, two more function actually. So get size, this will return the size of an animal, and then we're gonna have a weight, and it would return the weight, which will be again in integer format, so we're gonna return the weight. Alright, let me correct this now. Okay, now you can see we have now completed a very basic structure of this base class, which is animal. Now we're going to create a specific class of an animal, and in this case we are creating for which kind of an animal? Dog. Okay, now for creating this class I'm going to go one more time to the same package folder, okay, in which both of my classes exist, main class as well as animal class. Right click over here, go to new Java class and give this class a name which is representing meaningfully. In this case we are creating for dog, so I'm going to give this dog. Okay, now we're gonna
extend, we're gonna inherit from which class? From the animal class. Okay, so how can we inherit this? By the help of extend keyword. Okay, so you can see in Java programming language, whenever you want to inherit from any base or parent class, you have to use this keyword, and this keyword is known as extend. Okay, so you are extending the animal class for which class? Dog class. So now every features which are available within this animal class will now be also accessible to dog class. Okay, let's see. Now I'm gonna extend this class. You can see that IntelliJ is giving out a suggestion for extend. I'm gonna hit enter, and now I'm gonna pass it on the name for my base class. For the parent class, it would be animal. So now you can see that this particular statement is now underlined with a red underline, and what it is saying that there is no default constructor available in animal class. So what it means, that it is stating that we don't have any default constructor. Okay, so we have to initialize all of these fields in the dog class also. So we're gonna do this in a moment. For now, I'm gonna move with first defining out the fields which are unique for this particular dog class. So every dog, you know, has eyes, legs, have number of have a tail, have teeth, and have a coat. A coat means the skin fabric, right? So what I'm gonna do is I'm gonna say that I'm gonna define private fields, private integer for the number of eyes, then for number of legs, private integer number of legs, then a tail for the tail, then for the teeth. So these are the unique characteristics which are available for the animal dog, and then we're gonna give the skin, I'm gonna call it skin coat. Okay, so now we have these unique fields available within the dog class. So now what I'm gonna do is I'm gonna make the constructor, and inside the constructor of this class I'm gonna also call the base class. So a base class constructor, so then all of these fields will be initialized, and then this error will be resolved. Why it is throwing an error? Because whenever you are inheriting from a base class, so it's must that you have to initialize all the data which is available within the constructor of that base class, so then you can proceed further. Because if you will not initialize this data, then how can you access the name? How can you access the brain, body size and weight for an animal? You cannot access it because you haven't initialized it, right? So you have to initialize your base class fields by the help of constructor, by calling the constructor of the base class. Alright, so how we're gonna do that? It is very easy. As you can see, we're gonna make the constructor for this drive class dog, and then we're gonna pass the parameters one by one. Okay, the name, the brain, body size, weight. Okay, so all of these properties are available within the animal class from which you are inheriting. So these values will be initialized when I'm gonna call this super function. तो जब मैं सुपर फंक्शन चलाऊंगा तो सुपर फंक्शन क्या करेगा? ये नेम और ब्रेन, बॉडी, साइज और वेट इसको इनिशियलाइज कर देगा हमारी पेरेंट क्लास के मदद से, ठीक है, जो कि क्या है? एनिमल। और बाकी जो सारी चीज़ें हैं वो यूनिक हैं, तो जो प्रॉपर्टीज़ यूनिक हैं वो सारी आप अगेन उसी तरीके से क्या करोगे? इनिशियलाइज करोगे। आइस, लेग्स, टेल, टीथ एंड स्किन कोड. So let's see this in action. So I'm gonna create a constructor for this class, public dog, and then I'm gonna pass
the values. For eyes, I'm gonna say eyes. For legs, I'm gonna say legs. For tail, I'm gonna say tail. For teeth, I'm gonna say teeth. For skin code, I'm gonna say skin code. Okay, and then I'm gonna initialize one by one these properties. Okay, first of all, as you can see, it is throwing an error now over here, because again it is telling me that there is no default constructor available in animal. Okay, so what I'm gonna do, I'm gonna initialize these fields, okay, by calling inside the constructor of drive class super function, and I'm gonna pass the name. Okay, but first I have to pass, before calling this function, I have also have to pass on the parameters over here. Okay, so I'm gonna copy this out and paste it in. Alright, now all of these features are available within the animal class. So these features will be initialized by the animal class constructor. How? By calling super function. It means that you are calling the constructor of super class. Okay, by calling this super function, it means कि आप क्या कर रहे हो, आप कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट कर रहे हो बेस क्लास का. इन दिस केस बेस क्लास कौन है? एनिमल. तो ये कॉन्सेप्ट थोड़े से कंफ्यूज करेंगे आपको, बट पे अटेंशन वेरी वेल. आपको इसमें बहुत ज़्यादा जो है अटेंशन रिक्वायर है. बहुत इस वीडियोस में इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप इसको बार बार, यू कैन रिपीट द लेक्चर, राइट. तो आप लेक्चर को बार बार रिपीट करके अंडरस्टैंड कर सकते हो मच बेटर. ओके, तो यह एक बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके लिए. वरना अगर मैं इसको डायरेक्टली रिकॉर्ड ना करूं और मैं डायरेक्टली इसको जो है वो डिलीवर करूं लेक्चर को, तो बहुत सी कंफ्यूजन जो है वो आपके जहन में रह सकती है और आप जो है उस कॉन्सेप्ट को सही से ग्रैस्प नहीं कर सकते. तो लेक्चर बनाने का मकसद ये है कि आप इस लेक्चर को जितनी बार चाहो आप रिपीट कर सको, राइट. तो अब यहाँ पर ये जो फंक्शन मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, तो इस फंक्शन के अंदर पर्पज़ ये है कि ये जो हमारी फील्ड्स हैं, ठीक है, यहाँ पे तो डिफाइन नहीं है. ये सारी फील्ड्स जो हैं ये मैं इसलिए इनिशियलाइज कर रहा हूँ ताकि मैं इनको भी एक्सेस कर सकूँ, राइट. क्योंकि हमें डॉग का भी क्या करना पड़ेगा, नाम, डॉग हैज़ अ ब्रेन और नॉट, ये बताना है, बॉडी, साइज, वेट, उसका सब बताना है. तो ये सारी फील्ड तो मैं इससे इनहेरिट कर रहा हूँ, लेकिन मुझे इसको पहले इनिशियलाइज भी तो करना है मेमोरी के अंदर ताकि मैं इसको इस्तेमाल कर सकूँ. तो वो कैसे इनिशियलाइज करूँगा, मैं यहाँ पे कॉल करूँगा सुपर फंक्शन को. सुपर फंक्शन क्या करेगा, इस एनिमल क्लास के कंस्ट्रक्टर को एग्जीक्यूट कर देगा. जब ये कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा तो ये सारी प्रॉपर्टीज इनिशियलाइज हो जाएंगी. जब ये सारी प्रॉपर्टीज इनिशियलाइज हो जाएंगी तो हम यहाँ पर आके डॉग क्लास के ऑब्जेक्ट के जरिए इन फील्ड्स को भी क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, और डॉग का नाम, ब्रेन, बॉडी, साइज, वेट वगैरह भी डिफाइन कर सकते हैं. तो यहाँ पे आके मैं क्या करूँगा, वन बाय वन नेम, उसके बाद यहाँ पे हमें बताना है ब्रेन. तो ब्रेन के लिए मैं यहाँ पे 1 नंबर इंक्लूड कर दूंगा. 1 नंबर का मतलब ये कि इज अ ट्रू दैट डॉग हैव अ ब्रेन, ठीक है. इसी तरीके से डॉग हैव अ बॉडी, यहाँ पे 1 नंबर इंक्लूड कर दूंगा. और फिर डॉग हैव अ सर्टेन साइज, तो साइज के लिए मैं इसको साइज ही रहने देता हूँ. डॉग हैज अ सर्टेन वेट, तो वेट के लिए भी. तो अब साइज और वेट जो होते हैं वो तो डॉग में डिफरेंट कैटेगरीज आती हैं ना, तो डिफरेंट कैटेगरीज के डिफरेंट साइज होते हैं, डिफरेंट वेट होते हैं. लेकिन हर डॉग की बॉडी तो होती है, तो मैंने इसको ट्रू कर दिया. हर डॉग का ब्रेन तो होगा, एवरी डॉग हैज अ ब्रेन, तो मैं यहाँ पे क्या कर दिया, इसको 1 कर दिया. तो पॉइंट ये है कहने का. और डॉग का नेम आपको पता है कि नाम जो होता है वो डिफरेंट होता है, तो डिफरेंट ब्रीड्स होती हैं डॉग्स की, राइट. तो एवरी काइंड ऑफ अ डॉग हैज अ डिफरेंट नेम एंड यू कैन गिव आउट योर ओन काइंड ऑफ अ निक नेम टू अ डॉग, राइट. सो ये हमारा जो जितनी भी फील्ड्स हो गई, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, वेट तक, ये सारी हमारी पेस क्लास से एग्जीक्यूट होंगी, इनिशियलाइज होंगी, ठीक है, सुपर फंक्शन के जरिए. इसके बाद जो है हमारी जो बाकी की फील्ड्स हैं वो यूनिक है. आईज, लेग्स, टेल, टीथ और स्किन कोड. और ये सारी जो यूनिक फील्ड्स हैं, ठीक है, ये सारी जितनी भी यूनिक हैं फील्ड्स, ये सारी कैसे इनिशियलाइज होंगी, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सारी जो ऊपर हमने प्रॉपर्टीज बनाई हैं, ठीक है, जो कि इस क्लास की यूनिक प्रॉपर्टीज हैं. तो यहाँ पे आके हम उनको इनिशियलाइज कर देंगे उसी तरीके से. दिस डॉट, सबसे पहले आइस इज इक्वल टू आइस. दिस डॉट लेग्स इज इक्वल टू लेग्स. दिस डॉट
tail is equal to tail for a dog, this dot teeth is equal to teeth, alright, and then this dot skin coat is equal to skin coat itself. Now we have defined the constructor for this child class dog. Now what else is to do is to define some helper methods, alright. So we're gonna define a helper method for a dog which is chew, right. तो chewing जो है वो हर dog करता है for a food, तो हम यहाँ पे एक chew function बनाएंगे and we're gonna say just that the dog chew its food. Then we're gonna make one more function for a walk. Every dog walks, you know, right. So we're gonna say that the dog dot walk is called, and we're gonna also call the base function for walk. As you know that when obviously when dog walk, so dog gonna walk at certain speed, right. So we're gonna call this function. This function is not available within this class, but you remember this function is available within which class? Animal class. So basically we are calling the function of a parent class in child class. So that is the functionality of inheritance, right. You can extend, you can access, you can reuse the same code over and over again which is available within the base class. Okay, so I'm gonna come over here. So I'm gonna make first function for chew, public void chew, which is a function which performs by dog when dog eats, right. So we're gonna say we're gonna first call the base function eat. As you can see that this eat function is not available here. It is available in which class? In animal class, but I can access this in child class. How? By the help of extending the class, by the help of inheritance. Okay, अगर मैं ये extend हटा दूं यहाँ से, तो आप देख सकते हो कि अब यहाँ पे भी एरर आ चुका है. यहाँ पे क्यों एरर आया? ठीक है, अगर मैं इस पे हवर करूँ तो अभी मुझे क्या बता रहा है कि 0 आर्ग्यूमेंट्स एक्सपेक्ट कर रहा था लेकिन फाउंड हुए हैं 5, क्योंकि अब उसको कोई उसकी सुपर क्लास मौजूद ही नहीं है, कोई उसकी पेरेंट क्लास मौजूद ही नहीं है, तो वो कहाँ से डेटा लेकर आएगा इन सारी फील्ड्स का. ठीक है, और साथ ही साथ अगर मैं यहाँ पे आके अब ईट एक्सेस कर रहा हूँ तो आप देख रहे हो अब ईट भी एक्सेस नहीं हो रहा, यहाँ पे एरर आ रहा है. क्या बोल रहा है? कैन नॉट रिजॉल्व मेथड ईट इन डॉग, क्योंकि उसको ये फंक्शन मिल ही नहीं रहा. ठीक है ना, तो यही बात है इनहेरिटेंस की कि जब आप इनहेरिट करते हो, ठीक है, जब आप एक्सटेंड कर रहे हो तो जो भी फंक्शनैलिटी एनिमल क्लास में मौजूद है वो आप एक्सेस कर सकते हो. जो भी फंक्शंस मौजूद हैं जो पब्लिक हैं, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि पब्लिक होना चाहिए, आप उनको एक्सेस कर सकते हो. अच्छा, अब मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आके दोबारा ईट फंक्शन एक्सेस करता हूँ. यू कैन सी के नाउ आई कैन एक्सेस इट वन मोर टाइम. ओके, वाई? बिकॉज I have now extend again from animal class, and now you know when dog chew, a dog basically eats, and I'm gonna say that dog dot chew is called dog chew its food. Alright, so now you can see we have this unique function within the dog class. And then the same way I'm gonna make one more function for the for which functionality? For walk. Okay, for walk function for a dog I'm gonna call again the move function which is available within animal class, right. इसको कॉल करेंगे और जैसे मैंने यहाँ बताया था, आप देखो ये हमसे पैरामीटर मांग रहा है स्पीड. एनिमल क्लास में मैं आऊँ, आप देख सकते हो हमने यहाँ बताया हुआ था ना स्पीड. ठीक है, तो यही वही फंक्शन है जो मैं कॉल कर रहा हूँ चाइल्ड क्लास डॉग से. ठीक है, तो मुझे यहाँ पे बताना है स्पीड, तो मैंने बोला 5. ओके, सो द स्पीड इज 5, एंड नाउ आई एम गोना से दैट डॉग इज वॉकिंग एट हाउ मच स्पीड? एट 5 miles per hour, yeah, mph. Okay, all right, so whatever is the unit which is related to the movement or the speed, you can use it over here. All right, so now we have defined these two helper functions, and in the same way I'm going to define some more functions. Run. All right, so I'm going to say
public void run, and this will define the running action for a dog. Okay, so in this case, when a dog run, obviously the speed will be much greater than when dog is walking. So I'm gonna say move, I'm gonna again call the move, and this time the speed would be 15 because dog is running now. So I'm gonna say that dog.run function is called dog is running at 15 mph. Okay, so now you can see that we have built one class, one specific class of an animal. In this case it is dog. Now what I'm gonna do is I'm gonna come inside the main function, okay, inside the main class, and now I will come inside the main function, and in here I'm gonna make the object of this class, which is child class. In this case the parent class is animal, the child class is dog. Why? Because you are inheriting from animal. तो जब आप जिस क्लास से आप इनहेरिट कर रहे होते हो वो होती है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, पेरेंट क्लास, और जिस क्लास को प्रॉपर्टीज दे रहे हो वो क्या कहलाएगी? चाइल्ड क्लास. ठीक है, तो मेन क्लास में आके मेन फंक्शन के अंदर मैं क्या करूँगा? डॉग क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा. मैंने लिखा डॉग, ऑब्जेक्ट का नाम रखा डी इज इक्वल टू न्यू डॉग. ओके, अब ये मुझसे जो है पैरामीटर्स मांग रहा है वन बाय वन करके. क्या मैं अगर इस पर हवर करूं तो बता रहा है 10 आर्ग्यूमेंट्स. 10 आर्ग्यूमेंट्स एक्सपेक्ट कर रहा है. 10 आर्ग्यूमेंट्स क्यों एक्सपेक्ट कर रहा है? आप यहाँ पे काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10. सो ऑल ऑफ दीज पैरामीटर्स वी हैव टू प्रोवाइड. ठीक है भाई, नेम, ब्रेन, बॉडी, साइज, वेट, आईज, लेग्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो अगेन आई एम गोना कम ओवर हियर and then I'm gonna provide first the name for a dog. So I'm gonna say loafer. Okay, then what else we need is a brain. Yes, dog, this dog has a brain, this dog has a specific body. The size I'm gonna say, in this case I'm gonna just give a random number, in this case 50. For weight I'm gonna say 250. For the eyes I'm gonna say 2. For the legs I'm gonna say 4. For the tail I'm gonna say 1. For the teeth I'm gonna say 40, and for the let's say 30. And for the skin code I'm gonna say, for the skin code I'm gonna say that it has a silky coat. Okay, the skin is very silky. Okay, so now I have passed all the parameters for this particular object. So now what I'm gonna do is I'm gonna call the helper function by the help of this object name, which is D. I'm gonna call basically chew function, then I'm gonna call walk function, then I'm gonna call run function. So now if I execute this by pressing this button right here, you can see that it is building up the program, and now we're gonna have the output. You can see we have this output. First what happened is that animal.eat is called. Why it's called? Because you call the chew function, and you know that you have defined within the chew function to call the eat function, and eat function in animal is defined right here, and it is calling this animal.eat. So you can see that we have this output right here, and then what happens, this statement will be printed. You can see we have this statement right here, dog.chew is called. And now after this what we did, we call the walk function. So what we have over here as an output, animal.move is called. Why animal.move is called? Because in dog class inside the walk function you call the move function. The move function is available in which class?
animal class right here. Okay, and this is the statement which is being printed over here. Animal.move is called. Animal is moving at how much speed? 5 miles per hour. Why 5 miles per hour? Because you have passed over here 5, okay, as a parameter. So that's why you are getting this as an output. And then what is the statement next? Dog is walking at 5 miles per hour. You can see that over here. And next we have which function called? Run. Okay, now dog is running. So the function will be called is right here. You can see we have this output. Animal.move again is called because we are calling again move function, which is available within animal class, and we have this output. Alright, statement. Animal is moving at 15 miles per hour. And now after this we have the next statement which is available within this function. Dog.run is called. Dog is running at 15 miles per hour. So you can see the idea behind inheritance is to give you an opportunity so that you can reuse the base class as many times as you like. Okay, so that is very handy approach, because you can imagine if you define a base class which contains 100 of methods which will be utilized in 50 different classes. So this approach will gonna save you a lot of time. Alright, because you can basically just inherit from the base class and you can pass on all of those hundreds of methods which are available in just only one class. Out of those 100s of classes, you can pass the methods in the same way, just like you did over here in this drive class. What you did is you basically extend from the base class, and then you have used the eat function, move function, okay, which is not available in this class, and also these parameters, name, brain, size, weight, okay, all of these features are available within animal class, but you can use in the dog class as well. How? By the help of inheritance. One more time. So now I will basically make one more class. Alright, I'm going to make one more class for demonstrating little bit more about this concept. So I'm going to make a class for, in this case I'm going to make for fish. Okay, so I'm going to make one more class for an animal fish, and so I'm going to come over here inside the package folder. I'm going to right click, new Java class, and I'm going to call this fish. Now again in the same way I'm going to one more time inherit from the base class animal, extend from animal, which is a parent class. As you can see, again it is throwing an error because I didn't create the constructor for this class yet. So first of all I'm going to define the properties, the states. Private integer, so this will hold the number of gills for a fish, then the eyes, for the eyes of a fish, and then for the fins of a fish, number of fins. So I'm going to make these fields, and then I'm going to make the constructor one more time, public fish, and again in the same way just like we did with the dog class, I'm going to call the base, the generic fields. Okay, I'm going to call this constructor so that these fields are initialized and we can use it. Okay, so first is for string name, second it's for, I'm going to just copy this up. Alright, I'm going to delete this and paste it in. Then for the gills, which are unique field, eyes, and for fins. And now I'm going to call the super function, and inside the super function I will pass the name, and the brain would be equal to 1, the body would be equal to 1, the size for a fish, and then for the weight of a fish.
Okay, in the same way I'm gonna initialize for the ice for the okay. So over here you can see that it is throwing an error. Why? Because we have first GIL present over here, so we have to follow the instruction. Alright, so you can see that it is throwing an error. It is saying that it is not a statement. Alright, because in the order we have to pass it on the parameter also, and next for the fins. Alright, so now we have this constructor completed for this drive class or child class fish. And now the next thing is to make some helper function for this class. So I'm gonna make this for rest function. The fish is resting. Okay, this is an action that fish performs. So I'm gonna just say fish dot rest is called. Okay, then I'm gonna say public void move muscles. Okay, so the fish is moving the muscles, so this is a function, this is an action which fish performs. Okay, so I'm gonna just say that, to be very simple, I'm gonna say fish dot move muscles is called. You can add any kind of information as you like to make it a little bit more specific, but in this case I'm making it much more simpler. Okay, then I'm gonna say, I'm gonna make one more, move back fin. Alright, so fish is basically moving the back fin, so in this case I'm gonna say fish dot move back fin is called. Okay, so what else? I'm gonna make one more function, swim, and then I'm gonna say that fish is swimming, swim, and I'm gonna call move muscles. Move muscles is available right here. I'm calling this function within this function, okay, I'm calling this. Then I'm gonna call move back fin. Then I'm gonna say that the fish is swimming, fish is swimming at. Over here I'm gonna pass it on the parameter speed. What is the speed of a fish in which fish is swimming in water? Miles per hour. Okay, alright, so now this class is completed. You can see one more class is completed by the help of inheriting some features from the animal class. Alright, so now in the same way I'm gonna go to the main class and I'm gonna make one more object from fish class. I'm gonna say f is equal to new fish. Then first of all we have to give the name. So I'm gonna say what I'm gonna say in this case, I'm gonna say jellyfish. Okay, then we're gonna have a brain for the fish, the body for the fish, the size for the fish, the weight for the fish, the gills, number of gills. I'm gonna just place some random number, and the eyes and fins. Okay, I'm just placing some random number. Alright, so now I'm gonna call the helper methods. Okay, I'm gonna call first
the rest function, and then I'm gonna call the swim function, and in the swim function I'm gonna say 8. Alright, now if I save this and execute this, you will notice that we're gonna get the output. Okay, right here this is the output out of these two functions. So you can see that first there is a statement fish.rest is called because we call the rest function, and then we have 3 statements. Okay, these 3 statements are appeared by the help of this one function swim. So first we have fish.move muscle is called because in the fish class you notice that we have called the move muscle function while calling the swim function, and also move back fin function, and then we are stating that fish is swimming at 8 miles per hour. Okay,